इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत ही सिंपल से ट्रिक्स बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप गिवन नंबर का स्क्वायर बहुत ही फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. सो स्टार्ट्स विद द केस वन. द केस वन इज डिजिट हैविंग 5s यूनिट डिजिट. टेक एन एग्जांपल. यू हैव टू फाइंड स्क्वायर ऑफ 75. सबसे पहले हमें गिवन नंबर की यूनिट प्लेस से 5 हटाने के बाद जो रिमेनिंग नंबर है उसका सक्सेसर लिखना होता है. हियर सक्सेसर ऑफ 7 इज 8. 8 मल्टीप्लाई बाय 7. 7 इसलिए क्योंकि गिवन नंबर में यूनिट प्लेस से 5 हटाने के बाद 7 बचता है. 8 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 56. उसके बाद सिंपली 56 के आगे 25 लिख देंगे. 5625 इज आवर आंसर. टेक अनदर एग्जाम्पल. स्क्वायर ऑफ 115. सो फर्स्ट स्टेप इज सेम. 5 को एक्सक्लूड करने के बाद रिमेनिंग डिजिट देखेंगे. दैट इज 11. सक्सेसर ऑफ 11 इज 12. and 12 multiplied by 11. 12 multiplied by 11 gives 132. 132 के आगे हमें बस सिंपली 25 लिख देना है. देन 13,225 इज आवर आंसर. Move on to case 2. Case 2 is numbers between 40 to 50. Now take an example. Square of 43. The first step is write the square of 50. The square of 50 is 2500. Then after writing square of 50, write the difference of the given number, that is 43 and 50. Difference of 50 and 43 is 7. 50 minus 43 is 7. Then write 7 just below the number 25. After writing 7 below 25, square the difference. The square of 7 is 49. 7 times 7 is 49. Write 49 below 0. After writing 49 below 0, the next step is subtract 7 from 25. 25 minus 7 is 18. And add 49 to 0. 0 plus 49 is 49. 1849 is your answer. Let's move on to the next example. The next example is the square of 48. The first step is again write the square of 50, that is 2500. After writing 2500, the difference of the given number is 48 and 50. So 50 minus 48 is 2. Simply write 2 below 25. After writing 2 below 25, the next step is square the difference. So the square of 2 is 4. Write 4 below 0. After writing 4 below 0, the next step is subtract 2 from 25. 25 minus 2 is 23. And add 4 to 0. 2304 is your answer. Numbers between 50 to 60. Take an example. Square of 53. The first step is write square of 50, 2500. Then write the difference of the number and 50. सेम जो हमने लास्ट मेथड में करा था वही हमें यहाँ पर भी करना है. 53 जो हमारा गिवन नंबर है और 50 का डिफरेंस लिखना है. 53 माइनस 53. उसके बाद 3 को हमें 25 के नीचे लिख देना है. देन स्क्वायर द डिफरेंस. द स्क्वायर ऑफ 3 is 9. Then write 9 below 0. After this, केस 2 और केस 3 में बस ये डिफरेंस है कि लास्ट केस में हम 25 में से जो नंबर रहता था उसे सब्सट्रैक्ट करते थे, बट हियर वी हैव टू ऐड. तो 25 प्लस 3 is 28. Then again add 9 to 0. 0 plus 9 is 09. 2809 is your answer. Move to the next example. The next example is the square of 58. Write square of 50, 2500.
then गिवन नंबर 58 और 50 का डिफरेंस लिखा जाएगा. द डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर 58 and 50. 58 minus 50 is 8. Write 8 below 25. Then the next step is square the difference. The square of difference 8 is 64. Write 64 below 0. Then add 8 to 25. 25 plus 8 is 33. And add 64 to 0. That is 64. 3364 is your answer. Move on to the next case, case 4. Numbers between 90 to 100. Take an example, 92 square. The first step is write square of 100. The square of 100 is 10,000. Then the difference of the given number, that is 92 and 100. The difference of 92 and 100 is 8. Now in this case there is another step. We have to multiply the difference by 2. So 2 multiply by the difference, that is 8. 2 multiply by 8 gives 16. Write 16 below 100. Then again square the difference, that is square of 8, which is 64. Write 64 below 0. Then move on to the next step. The next step is subtract 16 from 100. 100 minus 16 is 84. Add 64 to 0, which gives 64. 8464 is your answer. Let's move to next example. The next example is 97 square. So write square of 100, that is 10,000. Then like the previous example, we have to find the difference of the given number and 100. So the difference of 100 and the given number is 3. 100 minus 97 is 3. After finding the difference, we have to multiply the difference by 2. So multiplying the difference by 2, 2 multiply by the difference, that is 3. 2 multiplied by 3 gives 6. Writing 6 below 100. After writing 6 below 100, we have to square the difference. The square of 3 is 9. Write 9 below 0. After writing 9 below 0, we have to subtract 6 from 100. 100 minus 6 is 94. And add 9 to 0. 0 plus 9 is 9. 9409 is your answer. Thank you for watching the video. Please share and subscribe the channel.